जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटिंग टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। टुडे वील बी स्टार्टिंग विद द डेफिशिएंसीज, नॉन कंटेजियस एंड अदर डिसीजेस। तो वो इसमें सब एक साथ ऐड हो जाएंगी। जितनी भी बची हुई डिसीजेज हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं दैट वुड बी एडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम इसके साथ। और इसके अलावा देखिए वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, ये दोनों तो रनिंग प्लेलिस्ट हैं ही आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड जोग्राफी। एंड देखिए करंट अफेयर्स में लास्ट आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो भी आया था मार्केट में वो हमने डिस्कस करके रखा हुआ था। अब फॉलोअप में जो भी आएगा नेक्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Now, arthritis is caused by the deposition of which of the following in the joints of the body? So, arthritis जो होता है बॉडी में वो किसके deposition की वजह से होता है? It is caused by the deposition of uric acid crystals, that is the monosodium urate in the joints and fluids within the body. Gout is a painful form of arthritis. Gout जो है वो एक painful form है arthritis का. Next, high level of uric acid in the blood is characteristic of which disease? High level of uric acid अगर है तो it is characteristic of gout. ठीक है, gout is a disease which is caused by high level of uric acid in the body, that is hyperuricemia भी होता है. It causes an attack of sudden burning, pain, stiffness and swelling in a joint. Next, the person who eat cooked food with adulterated mustard oil can cause dangerous disease, that is dropsy. Now, which of the following reasons may not be correct as happened in India? Not be correct बताना है. Argemone oil adulteration, this was one of the reason. Parts of cyanide in the mustard oil, unfortunately, but yes, this was also the reason. White color adulteration, yes. Now, adulteration of rice husk in oil. So, this, which one of the following reasons may not be correct? So, this reason might not be correct in India. Now, dropsy disease is characterized by swelling of the body tissue. अब इसमें होता क्या है कि जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स. नाउ व्हेन द मस्टर्ड ऑयल इज एडल्ट्रेट डेलिबरेटली एज इन मोस्ट केसेस और एक्सीडेंटली विल आजमोन ऑयल प्रोटीन्यूरिया अकर्स. इसमें क्या होता है? प्रोटीन्यूरिया हो जाता है. नाउ इन मस्टर्ड द एडल्ट्रेशन लाइक अ मिक्सचर ऑफ साइनाइड पार्ट्स एंड मिक्सिंग ऑफ वाइट कलर सब्सटेंसेज यूजुअली हैपन्स, while the adulteration of the rice husk in oil is not a correct reason. Next, it begins as a single cell and grows into a merciless disease that claims millions of lives year after year. But scientists are steadily unlocking its mysteries and fight against it. It may now have reached a dramatic turning point. New discoveries promise better therapies and hope in the war against the disease referred to above. In the above quotation is. So देखिए 1995 का ये क्वेश्चन है. अभी तो आपको पढ़ते ही पहली लाइन आपको समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है. So this disease is actually cancer. ठीक है, तो कैंसर में abnormal cell growth होती है with the potential to invade or spread to other parts of the body. Not all tumors are cancerous. Benign tumors do not spread to other parts of the body. Now, possible signs and symptoms इसमें क्या होंगे? न्यू लंप बन सकता है, abnormal bleeding हो सकती है, prolonged cough, unexplained weight loss, change in the bowel movements. And while all these symptoms may indicate cancer, they may also occur due to other reasons. So there are 100 different types of known cancers जो कि human को affect कर रहा है. Next, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ. एंथोफोबिया किसका फियर है? सो इट इज़ द फियर ऑफ फ्लावर्स. एंथोफोबिया इज़ एन abnormal एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ फ्लावर्स. देखिए अगर कोई फ्लावर्स आर सच अ ब्यूटीफुल क्रिएशन और अगर इससे फियर कर रहा है तो पूरी लाइफ उनको सफ़र करना पड़ता है. दिस इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ थिंग जो कि एग्जिस्ट करती है एक्चुअली. सो बहुत कम होता है बट इट एग्जिस्ट. सो द टर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स एंथोस विच इज़ मीनिंग फ्लावर एंड फोबोज मीनिंग fear. Next, the disease hysteria generally occurs in which group? Hysteria, married women, old women, young women, young men and women. So hysteria जो होता है वो young men and women में होता है. ठीक है. It mainly occurs in young and unmarried women. It is a genital disease in which symptoms of anxiety, discomfort and faintness आपको मिलेंगे. Next, silicosis क्या है? Silicosis is a lung disease. और silicosis एक lung disease है जो कि सिलिका के टाइनी बाइट्स को इनहेल करने की वजह से हो जाता है. एंड इट इज़ अ कॉमन मिनरल विच इज़ अ पार्ट ऑफ सैंड, रॉक एंड मिनरल ओर्स लाइक क्वार्ट्ज. नेक्स्ट, द मैल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. Goiter is an abnormal enlargement of the thyroid gland.
The most common cause of the which is lack of iodine in diet. Deficiency of iodine leads to decreased production of thyroxine and triiodothyronine hormone, which from the thyroid gland, which are necessary to regulate the metabolic rate and other vital body functions. Next, match the following and select the correct answer from the codes given below. Anemia, goiter, night blindness, beriberi. So, anemia is due to iron deficiency. राइट गॉइटर किसकी वजह से होता है तो गॉइटर इज ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड बेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ठीक है सो आयन एनीमिया होता है आयन की वजह से गॉइटर इज ड्यू टू आयोडीन नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू विटामिन ए एंड बेरी इज ड्यू टू विटामिन बी Next, deficiency of iodine causes, so it causes goiter. Shortage of which element causes goiter? Iodine. Next, iodine is administered to patients suffering from goiter. Goiter को हिंदी में बोलते हैं घेंघा. Next, use of polished rice in human diets causes which of the following? So, use of polished rice in polished rice in human diet causes the following diseases. It causes beriberi. ठीक है. White rice is milled rice that had its husk, bran and germ removed. Now after milling, the rice is polished, resulting in a seed with a bright white shiny appearance. The milling and the polishing processes of polished rice both remove the nutrients. Now a diet based on polished rice leaves many people vulnerable to the neurological disease beriberi, जो कि होता है because of the deficiency of thiamine, that is vitamin B1. Now adopted over brown rice is the second half of the 19th century because it was favored by traders. White rice has led to beriberi epidemic in Asia, including the British India. Next, use of polished rice in human diet causes the following disease. So it causes beriberi. In countries where polished rice is the main cereal in their diet, people might suffer from beriberi. Next, a man who does not know when to stop eating, उसको बोलते हैं बुलीमिया सो बुलीमिया नर्वोसा इट्स कॉमनली कॉल्ड बुलीमिया इट इज़ अ सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर Now people with bulimia may secretly binge, eating a large amount of food and purge, trying to get rid of extra calories in an unhealthy way. Now they attempt to use purging to manage their weight and prevent additional weight gain. A man who is suffering from bulimia does not know when to stop eating. Next is the blue baby pollution disease is due to the excessive presence of which of the following in drinking water. So it is due to the presence of nitrate. Excessive amount of nitrate जब पानी में होता है और आप उसको continuously intake कर रहे होते हो, so blue baby syndrome होने के chances होते हैं. The nitrate then reacts with oxyhemoglobin to form the methemoglobin and which cannot carry the oxygen. Now if a large amount of methemoglobin is formed in the blood, body tissues may be deprived of oxygen, causing the infant to develop a blue coloration of their mucous membranes and possibly digestive and respiratory problems. इस कंडीशन को मेथेमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं ठीक है Excess of which of the following in the blood causes the blue baby syndrome? So it is methemoglobin. Blue baby syndrome is due to the presence of which of the following in the blood? Methemoglobin. What is correct sequence of the following in a heart attack? करेक्ट सीक्वेंस बोल रहे हैं ठीक है अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो क्या क्या हो सकता है सो नैरोइंग ऑफ इनर ओरिफाइस ऑफ वेसल प्लाक फ्रॉम फिब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल inadequate supply of water okay clots of blood carried into the coronary okay देखिए इसका जो क्रोनोलॉजी वो होगी वो कैसी होगी पहले तो जो दिस प्लाक फ्रॉम फिब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक है दूसरा क्या होगा सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगा द क्लॉट्स ऑफ ब्लड जो हैं दे वुड बी कैरिड टू द वो जो है वो कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंचेंगे क्लॉट्स जो हैं राइट नाउ इसकी वजह से क्या होगा जो इनर ओरिफाइस है वेसल का वो नैरो हो जाएगा पतला हो जाएगा सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा एंड इनएडिक्वेट सप्लाई अब आपको पहुंचेगा ना तो अब आपके पास पूरा ब्लड पहुंच रहा है और ना ही ऑक्सीजन पहुंच रहा है और इस केस में आपको फील होगा कि यू कैन फील समथिंग हैवी नियर द हार्ट और ये हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं Now the internal way of blood vessel gets narrow due to the collection of cholesterol and rashes upon fibrous and then reaching of the blood clots makes the passage more narrow. So the body gets less supply of oxygen and blood. The cause of heart attack may be obesity, hypertension, smoking and oily or fatty food. Next, in medical terminology, golden hour is related with, so it is related with heart attack. It is the critical 1 hour from the onset of a heart attack and most of the death occur during this golden period only if not treated properly. Sorry, golden period नहीं golden hour so sorry.
बीटा ब्लॉकर इज अ मेडिसिन टू सेव फ्रॉम, इट इज़ टू सेव फ्रॉम हार्ट अटैक. बीटा ब्लॉकर्स को बीटा एड्रेनोसेप्टर भी बोलते हैं. दीज आर द एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड दीज आर द ड्रग्स दैट आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट सेवरल different types of conditions, including the hypertension, angina, some abnormal heart rhythms, and heart attacks. Next, which of the following is essential to regulate the heartbeat? So, potassium is essential to regulate the heartbeat. Potassium plays a key role in every heartbeat. Play a role in every heartbeat. Now, it helps trigger the heart to squeeze blood through the body. It also helps your muscles to move, nerves to work, and kidneys to filter the blood. Now, phosphorus is good for the development of bones, whereas iron deficiency leads to anemia. ठीक है. Next, which one among these is related to the deficiency of potassium? So it is low blood pressure. Lack of potassium in the blood causes low blood pressure. It is a mineral whose major sources are flesh, milk, cereals, fruits, and vegetables. If albumin is releasing with the urine, then the failure of which organ may occur? So kidney failure हो सकता है. If urine there are in urine there are about 95% water, 2% unuseful salt ions, 2.6% urea, 0.3% creatinine, and very small amount of uric acid and some other useless matter. Now, the presence of albumin, a protein found in the plasma, it increases the chance of kidney failure. Which organ of the body is affected most on keeping fast for a long time? So, kidney is affected most on keeping fast for a long time. Next, in the modern days, the nuclear medicines play a vital role in medical science. They are exactly nuclear medicines की हम बात करें क्या है वो exactly? So they are exactly the radioisotopes. In modern days, nuclear medicine जो है, it plays a vital role in the field of medical science. अब ये जो branch है, it uses the radioactive isotopes, radiations to provide the information about functioning of a person's specific organ or to treat the diseases. Match list 1 with list 2. List 1 is radioisotope. List 2 is the diagnostic use. Arsenic 74, cobalt 80, iodine 131, sodium 24. So देखिए arsenic 74 is used to diagnose the tumor. Cobalt 60 is to diagnose the cancer. Iodine 131 जो है वो thyroid, because iodine की कमी से हो जाता है कभी कभी thyroid gland. And sodium 24 is for blood disorder. Which one is not correctly matched? So cobalt treatment of body's internal neoplasm. Iodine for treatment of thyroid neoplasm. Phosphorus is for the treatment of leukemia. Gold 198 is for treatment of retinal disorders. देखिए gold 98 जो होता है वो कैंसर के लिए ही होता है, retinal disorders के लिए मतलब आँखों से related disorders के लिए नहीं होता है. Right? So this is incorrectly matched. And the last question for today, why it is last? Because ये chapter बहुत बड़ा है, इसमें around 110-20 questions हैं. So we'll keep it to this. 4 videos में most probably हम इसको complete करेंगे. Alright? So next question here is, which of the following radio elements is used to measure the speed of the blood flow in the human body? So this is radiosodium, right? Radiosodium is used to measure the speed of the blood flow in the human body. So this is all for it, today's video. Do share the video, like the video and subscribe the channel. And आते हैं तो please like करके जाइए video को, है ना? It simply takes nothing. No time, within a fraction of second आप कर सकते हैं. So it would be a help to boost my confidence, right? So thank you so much. Keep studying, keep revising. Jai Hind, Jai Bharat.